Good morning, students. Today we will do exercise 13.2 of vector topic. 13.2 question number first. If magnitude of two vectors be 4 and 5 units, then find the scalar product. If angle between them is first part 60 degree, second is 90 degree, and third part is 30 degree. Solution. First part. We are given मैग्नीट्यूड. हमें क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 4 यूनिट्स. बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 यूनिट्स. थीटा इज 60 डिग्री. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. वी नो दैट A vector dot B vector equal to A vector magnitude into B vector magnitude into cosine of theta. A vector magnitude is 4, B vector magnitude is 5, cos theta. Theta is 60 degree. Multiplication 20. Cos 60 degrees 1 upon 2. Final answer is 10. Second solution, we are given theta is equals to 90 degree. Same formula, A vector dot B vector equal to A magnitude into B magnitude into cosine of theta. A magnitude is 4, B vector magnitude is 5 into cos theta. Theta is 90 degree. 20 into cos 90 degree is 0. 0 into anything is 0. Third part is theta is equals to 30 degree. Applying same formula, A vector dot B vector equal to A vector magnitude B vector magnitude into cosine of theta. A vector magnitude is 4, B vector magnitude is 5 into cos theta. Theta is 30 degree. 4 into 5 20 into cos 30 degree is root 3 upon 2. So final answer is 10 root 3. Final answer is 10 root 3. Clear? We have to apply the formula scalar product A vector dot B vector equal to A vector magnitude into B vector magnitude into cosine of angle between the two vectors. In first part we are given 60 degree, second part 90 degree, and third part 30 degree. Applying the formula, we get the final answer. Clear? Question number second is find A vector dot B vector if we are given A vector and B vector. First part is A vector equal to 2i cap plus 5j cap. B vector equal to 3i cap minus 2j cap. We have to find A vector dot B vector. We know that A vector dot B vector equal to, in this question we are not given angle between A vector and B vector, so we will apply basic formula. Basic formula means we directly multiply A vector and B vector keeping in mind properties of dot product. A vector is 2i plus 5j dot 3i minus 2j cap. Now we know that I cap dot I cap is 1, coefficient 2 into 3 6.
j cap into j cap is 1, 5 into 2 is 10, minus का 10, final answer is minus का 4. We have to just multiply I cap to I cap, j cap to j cap, and k cap to k cap. Second part is a vector equal to 4 I cap plus 3k cap, b vector equal to I cap minus j cap plus k cap. We know a vector dot b vector equal to, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, 4 I cap प्लस 3k cap डॉट I cap माइनस j cap प्लस k cap. I cap dot I cap 1, 4 into 1, 4. इधर j cap है नहीं, j cap is missing, j cap coefficient is 0, 0 into 1 is 0, we get 0. K cap coefficient is 3, k cap coefficient is 1, 3 into 1 is 3. Final answer is 7. Similarly, third part. Third part, we are given a vector equal to 5 I cap plus j cap minus 2k cap, b vector equal to 2 I cap minus 3j cap. Therefore, a vector dot b vector equal to, putting the values, 5 I cap plus j cap minus 2k cap dot 2 I cap minus 3j cap. I cap coefficient 5, I cap coefficient 2. 5 into 2 is 10. J cap coefficient is 1, J cap coefficient is minus 3. Minus 3. K cap coefficient is minus 2. Here K cap coefficient is 0. 0. Final answer is 7. Clear? We have to find a vector dot b vector, and we are given a vector and b vector. A dot b, सीधा हमने वैल्यू रखी a वेक्टर की, b वेक्टर की, बीच में डॉट प्रोडक्ट है. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1, j डॉट j 1 एंड k डॉट k 1, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया i कैप के कोफिशिएंट को i कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, k cap के coefficient into k cap coefficient, and on simplification we get the final answer. Clear? Next question is question number 3. We have to prove that a vector dot b vector square is less than equals to a vector magnitude square magnitude of b vector square. A vector dot b vector square equal to, taking left hand side, a vector dot b vector square equal to, a vector dot b vector formula is a vector magnitude b vector magnitude into cosine of angle between them whole square. Opening the square, a vector square b vector square into cos square theta. Now we know that cos square theta is always less than equals to 1. cos square theta की जो वैल्यू है हमेशा 1 के इक्वल या 1 से लेस ही आएगी. सो therefore a vector dot b vector square, if this is less than equals to 1, then its product is less than equals to a vector magnitude square and b vector magnitude square, which is the final answer that we have to prove. Clear? We have to prove that a vector dot b vector square is less than equals to magnitude of a vector square
into magnitude of b vector square. Taking a vector dot b vector square, a vector dot b vector is a vector magnitude b vector magnitude into cosine of theta का whole square. Opening the square, a vector magnitude square b vector magnitude square into cos square theta. We know that cos square theta is always less than equals to 1. If this is less than equals to 1, then product will be less than equals to a vector square b vector magnitude square. That we have to prove the inequality. Clear? Question number 4 is, if coordinates of point P and Q are 3, 4 and 12, 9 respectively, then find the angle POQ where O is origin. We are given point P is 3, 4, point Q is 12, 9. This is origin. We have to find angle POQ. We have to find this angle. First, we will find OP vector. OP vector equal to let it be A vector. इस OP vector को हमने क्या मान लिया? A vector. OQ vector B vector and required angle is angle theta. So OP vector equal to A vector equal to 3 I cap plus 4 j cap. Similarly, OQ vector, let it be B vector. This will be 12 I cap plus 9 j cap. Let angle POQ equal to theta. Therefore, A vector dot B vector equal to A vector magnitude into B vector magnitude into cosine of theta. A vector dot B vector. A vector is 3 I cap plus 4 j cap dot. B vector is 12 I cap plus 9 j cap equal to magnitude of A vector. A vector magnitude of A vector equal to square root I का कोफिशिएंट 3, J का कोफिशिएंट 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. On simplification 9 plus 16, 25 is 5. Similarly, B vector magnitude equal to square root B कोफिशिएंट I का कोफिशिएंट is 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. On simplification, we get 144 plus 81, which is 225. Final answer is 15. Final answer is 15. Now, putting the values, A vector magnitude is 5 into B vector magnitude is 15 into cosine of एंगल बिटवीन दैम. आई का आई के साथ में 36, जे कोफिशिएंट इंटू जे कोफिशिएंट 36 इक्वल टू 15 इंटू 5 इज 75 इंटू कॉस थीटा. फ्रॉम दिस 72 इक्वल टू 75 कॉस थीटा एंड cos theta equal to 72 upon 75 और theta equal to cos inverse 72 upon 75. From this theta equal to
कॉस इनवर्स 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6 3 4 12 3 2 6 3 5. Final answer is cos inverse 24 upon 25. We are given coordinates of P and Q. OP वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, OQ वेक्टर हो गया 12i कैप प्लस 9j कैप. ए वेक्टर जो है उस OP वेक्टर को हमने मान लिया ए वेक्टर. ए वेक्टर की वैल्यू जो आ गई 3i कैप प्लस 4j कैप, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया. मैग्नीट्यूड इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 स्क्वायर रूट होता है 5. बी वेक्टर इज 12i कैप प्लस 9j कैप, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 प्लस 81, we get 225 within square root. Final answer is 15. Now we know the formula a vector dot b vector equal to a vector magnitude into b vector magnitude into cosine of theta. a vector dot b vector की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया. डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं, i कोफिशिएंट इंटू i कोफिशिएंट, we get 36. j कोफिशिएंट इंटू j कोफिशिएंट is 36. a vector magnitude 5, b vector magnitude 15 into cosine of angle theta. 5 into 15 simplification, we get final answer as cos inverse 24 upon 25. Clear? Next question is question number 5. For which value of lambda vectors a vector and b vector are mutually perpendicular? First part we are given a vector, b vector. Second part a vector and b vector given. हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. A vector is perpendicular to B vector. Therefore, A vector dot B vector equal to 0. This is the condition for two vector to be perpendicular. उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. Now, putting the values of A vector and B vector, we get 2i cap plus lambda j cap dot b vector is 4i cap minus 2j cap minus 2k cap equal to 0. मल्टीप्लिकेशन i का i के साथ में कोफिशिएंट 2 इंटू 4 8, j का j के साथ में 2 इंटू लेमडा माइनस का 2 लेमडा. k का कोफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है, इज 0 इक्वल टू 0. वी गेट 2 लेमडा इक्वल टू 8 और लेमडा इक्वल टू 4. सेकेंड पार्ट, same process, a vector is perpendicular to b vector, so therefore a vector dot b vector equal to 0. Putting the values of a vector and b vector, a vector and b vector values 2i cap plus 3j cap plus 4k cap dot b vector is 3i cap plus 2j cap minus lambda k cap equal to 0. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डॉट i का i के साथ में कोफिशिएंट 2 इंटू 3 6, j का j के साथ में 3 इंटू 2 इज 6, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ में माइनस का 4 इंटू lambda इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस 12 इक्वल टू 4 lambda और lambda equal to 3. Clear? We have to remember the condition for two vector to be perpendicular. Two vectors अगर perpendicular है, condition is a vector dot b vector equal to 0. Put the values of a vector and dot a vector and b vector, simplify and get the required value of the lambda in both the parts. Clear? Question number 6 is find the projection of the vector on the second vector. हमें ना प्रोजेक्शन निकालना है
इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर, फर्स्ट वेक्टर को हमने नेम कर दिया ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 1k कैप, जिसके ऊपर निकालना है उसको हमने नेम कर दिया बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप। प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर इज गिवन 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 1k कैप डॉट बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप होल ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। डॉट मल्टीप्लिकेशन आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द आई कोफिशिएंट, 4 इंटू 3 12, जे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय जे कोफिशिएंट माइनस का 12, के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय के कोफिशिएंट माइनस 2 ओवर 3 square is 9, 6 square is 36, minus 2 square is 4. Cancel out, minus 2 over 49 is 7. So projection of A vector on B vector is minus 2 over 7. Projection formula is A vector dot B vector over B vector magnitude. हमें प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। पुट द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सिंप्लीफाई, वी गेट फाइनल आंसर एज माइनस 2 over 7. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, वी हैव टू फाइंड C vector such that ABC represents the sides of a right angle triangle. A vector is given 2i cap minus 16j cap plus 5k cap. B vector is 3i cap plus j cap plus 2k cap. We have to find C vector. We know that sum of all the three vectors in closed geometry is always equals to 0. कोई भी जो राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, A vector, this is B vector, then third side will give the resultant which is in the opposite direction of A vector and B vector, or we can say that sum of all the three vectors, vector sum of all sides is equals to 0. ये प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड फिगर्स का, सभी का वेक्टर सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. Putting the values of A vector and B vector, 2i cap minus 16j cap plus 5k cap plus B vector is 3i cap plus 1j cap plus 2k cap plus C vector equal to 0 vector. On simplification, I cap
plus 2 I cap plus 3 I cap is 5 I cap minus 16 plus 1 J cap minus का 15 J cap 5 K cap plus 2 K cap is 7 K cap plus C vector equal to 0 का 0 vector. We have to find the value of C vector. Shift all the terms, we get minus 5 I cap plus 15 J cap minus 7 K cap. This is the final answer. We are given two vectors. We have to find the third vector. If all the three vectors represents sides of right angle triangle. Right angle triangle means closed geometry. For closed geometry, vector sum of all the sides is equals to 0. Put the values of A vector and B vector, and after simplification we get C vector. Clear? Question number 8. If magnitude of A vector plus B vector is equal to magnitude of A vector minus B vector, then we have to prove that A vector and B vector are mutually perpendicular. We are given magnitude of A vector plus B vector is equal to magnitude of A vector minus B vector. Squaring both sides, we get A vector plus B vector magnitude square equal to A vector minus B vector magnitude square. Open the square, we get A vector magnitude square plus B vector magnitude square plus 2 times A vector dot B vector equal to, similarly on right hand side, A vector magnitude square plus B vector magnitude square minus 2 times A vector dot B vector. A vector magnitude square cancel, B vector magnitude square cancel. Final step, A vector dot B vector equal to, इधर रहेगा minus 2 times A vector dot B vector. Rearranging, we get 4 times A vector dot B vector equal to 0, or A vector dot B vector equal to 0, and we know that A vector dot B vector, if it becomes equal to 0, then A vector is perpendicular to B vector, hence the proof. Clear? We are given A vector plus B vector magnitude equal to A vector minus B vector magnitude. Squaring both sides, square लगाया, A plus B whole square की identity for magnitudes, A vector magnitude square plus B vector magnitude square plus times of A vector dot B vector आता है. Similarly, right hand side, A vector magnitude square plus B vector magnitude square minus 2 times A vector dot B vector. Simplify किया, we get 2 times A vector dot B vector. On right hand side, minus 2 times A vector dot B vector. Rearranging, we get A vector dot B vector equal to 0. Now we know that if A dot B equal to 0, A vector dot B vector equal to 0 आ जाता है, इसका मतलब होता है A vector और B vector क्या है, आपस में perpendicular है. Clear? Now in next class we will do remaining questions. Thank you.